দক্ষিণে সুপারস্টার বিজয় থালাপতি পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে চেন্নাইতে একটি বিশাল ইফতার পার্টির আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি সাদা পোশাক ও টুপি পরিধান করে উপস্থিত হন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইফতার ও নামাজে অংশগ্রহণ করেন। জানা গেছে সেদিন তিনি রোজা রেখেছিলেন। এই উদ্যোগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। অনেকেই একে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অন্যান্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছেন, তবে কিছু হিন্দুবাদী গোষ্ঠী এ নিয়ে সমালোচনা করেছে। প্রসঙ্গ, বিজয় সম্প্রতি তামিলাগা ভিত্তিত্র কাজাগাম নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন এবং 2026 সালে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করেছেন। இஸ்லாமிய பெருமக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেছেন এই ইফতার আয়োজন তাকে তামিলনাড়ুর মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছেও জনপ্রিয়তা এনে দিতে পারে। বিজয়ের এই পদক্ষেপে কেবল ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা বহন করে না, বরং এটি তার রাজনৈতিক কৌশলের অংশও হতে পারে, যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য তাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। থালাপতি বিজয়ের এই উদ্যোগ শান্তি, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির এক সুন্দর বার্তা দেয়। যদিও এটি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। எனது அன்பான இஸ்லாமிய பெருமக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி மனித நேயத்துக்கும் சகோதரத்துவத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி இங்க இருக்கிற அனைத்து இஸ்லாமிய சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய இந்த அன்பான அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டு நீங்க எல்லாரும் வந்து கலந்துகிட்டதுக்கு மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன்.